Good morning, everyone. Can you hear me? Yes, ma'am. Today we will start new chapter that is SQL structured query language. Introduction of this chapter. SQL structured query language is a special purpose programming language. This language we are using in database to fire query on database. It is designed for managing data in a relational database management system. It is based upon relational algebra that we have seen in previous chapter and consists of data definition language, data manipulation language, and data control language. These are the languages consist under SQL. In structure query language, we are going to see these three languages: data definition language, that is DDL, data manipulation language, DML, and data control language, DCL. It provides a language to create and modify schema. Schema means structure of your database, means table, table attributes. That is the structure. So that structure we can create or modify here. Insert, update, delete query. We can insert data into table, update data which is already inserted, and delete the data which is already inserted using these commands or using these languages. And the data access control. So using DDL, data definition language, we can create and modify schema. Here design part of your database is covered. In data manipulation language, DML, we have to insert data, update data, and delete data. And in data control language, we have to access the data. Who has the access the data that we have to control from here? Data control language. Why to use SQL? SQL allows user to access data in relational database management system. Data is already stored into the database that we can use or that we can access using this structured query language. Allows user to describe the data. User can create his own data. User can create his own database using SQL language. Allows user to define the data in the database and manipulate that data. User can define as well as alter that data. Allows to embed within other language using SQL modules, libraries, and pre-compilers. Now we are using various languages such as .NET language. In that .NET language also we can use this language. Means here we are embedding the SQL language into other languages. Allows user to create and drop databases and tables. Here we can create as well as drop databases as well as tables. Allows user to create view, store procedure, functions in a database. In database, we can create all these things: views, store procedure, and function. So we can that we can create using this SQL also, structured query language. Allow user to set permissions on table, means who has access to particular table, that permissions we can set on the table, on procedures as well as on views. So for this reason we can use SQL, structured query language. Using this language also we can create database, we can delete database, we can alter database. All these things are possible using coding through. Now this is the history of SQL, how SQL came into existence. First, in 1970, Dr. Edgar F. Ted Codd of IBM is known as the father of a relational database. Whatever database we are using now, relational database, who is the father? Ted Codd. He described the relational model for databases. Relational model means in previous chapter we have seen that a relational model, relational algebra structure. That structure is defined by Ted Codd. In 1974, structured query language appeared. Here relational model was appeared. Now here structured query languages appeared.
In 1978, IBM worked to develop Core's ideas. Whatever ideas he has created, that idea on that ideas IBM worked and released a product named System or R. After working on Core's idea in 1978, IBM has released one product, name it as System or R language. So after that, in 1986, IBM developed the first prototype of relational database and standardized by ANSI. The first relational database was released by Relational Software and it later becoming Oracle. Now we are using this database, Oracle database. So when that was appeared in 1986, 1970 relational model came, 1974 structured query language came, 1978 the system or R model or database came, and in 1986 Oracle database came. So this is the history of SQL language. What is the basic structure of SQL expression? Now we have to fire the query on the database, create the table, delete table, insert data into table. That query we have to file. So what is the basic structure of that expression, expression? So first we have to use three clauses, basic clauses. First is select clause, second one is from clause, and third is where clause. So what is select clause? Select clause corresponds to the projection operation. We are using relational algebra concept here. So for projection operation, we are using here select clause in SQL. Projection means if you want to show particular attributes to user, out of 5 attributes, if you want to show only 2 attributes to the user as your output, that time we can use projection. So in SQL, for that projection, we are using select clause to project attributes. It is used to list the attributes desired in the result of a query. So select clause and projection will both are same. They are coming late always. Next clause is from clause. First clause, selection clause and projection in relational algebra. Both are same. Now from clause. From clause corresponds to the Cartesian product. In this Cartesian product, we have to write the table name. On which table we are applying the query, that table name we have to write here. So in the from clause also, we have to write the table name. So from clause corresponds to the Cartesian product operation of the relational algebra. It lists the relations, means tables, to be scanned in the evaluation of the expression. Which table we have to use? For firing query, that table name we have to write after from. Then where clause corresponds to the selection predicate. This we have used in the relational algebra. Selection means we have to apply condition on your table. That time we are using selection predicate. So in the SQL we are using where clause. Instead of selection predicate, here we are using where clause. It consists of predicate means rule involving attributes of the relation that appear in the from clause. So here we are applying rule to the table which appear in the from clause. So this is the basic structure of SQL. In this we are using three clauses: select, from, and where clause. So these are the three clauses. Is there any doubt in these three clauses, students? No, ma'am. Select means projection. From means here we have to write the table, and where here we are using selection predicate means rule or condition. For example, subject is equal to DBMS. This is the condition. So after where we can use that condition. Typical query, how to write this basic structure. Here select. After that we have to write the attribute names. Which attribute we have to select. Select space attribute 1, attribute 2 till attribute n. How many attributes you have to show. In the output, that attribute you will write here with comma separated value. Then from, on which table you are using this query, that table name you have to write here.
How many tables are there? That many table names should be here with comma separated value. And where, after where we have to write the condition, means on which table we have to search particular roll number, particular subject. That query you will write in this where clause. So this is the basic structure. Now first command is ddl command, which we are going to fire on database. Data definition language, that is ddl commands, are used to define database structure or schema. Here we are going to design our database as well as tables. DDL statement create, modify, and remove database objects such as table, indexes, and users. Common DDL statements are, these are the statements which we are using on database: create, alter, and drop. For DDL, they will in the exam they will ask question which are the DDL commands. So DDL commands are create, alter, and drop. These three commands will work on the database structure and schema. Means here we are going to design of your database. Create. Design of your database as well as your table. Means here we are going to create your table. Then alter, if you want to do some changes. That changes we will apply on the schema only, on the design part only. And drop, if you don't want particular table or database, you can delete that table. So these are the three commands which comes under DDL command. They are giving in the exam also, they are giving the command names. For example, create, comma, insert, comma, delete. And you have to write the which command comes under which statements. For example, DDL commands, out of this create, insert, and delete. Which is the DDL command? Create, insert, delete. These are the three statements, different statements. Which is the DDL command out of these three? Create, insert, Create. and delete. Means create, Ma'am, which are, create. yes, create is the DDL command. Insert and delete we will see in the next slides. But now here for DDL command you have to remember only these three statements: create, alter, and drop. Example same: create table, alter table, and create index. First we will see create statement, how to create table in database. So create statement, the create table statement is used to create a table in a database. Tables are organized into rows and column. You know the definition of table. It is a combination of rows and column, and each table must have a name. Each table must have a name. So how to write the table? How to create table into database? This is the syntax. Create is the keyword. We have to write it. Then table is also keyword. So these two are keyword compulsory. We have to write it. After that, this is table name is the user defined name. User will decide which table name he has to give. So here user defined name, and these two are compulsory you have to write for creating table. Then these two brackets are important, curly brackets, opening curly bracket and closing curly bracket, after that semicolon. Inside this we have to write the column name. Now we have created table name only. In that table, how many attributes are there or how many columns are there? Which are the data type of that columns, that we have to mention here. So first column name, then its data type with size. If there is a size, we have to mention size. Then what constraint, means what rules we have to apply on this column, that rule we can mention here after the data type. Comma, second attribute, second column name, its data type, size if there. Comma, third column name, data type, and size, comma. Last, for last attribute, don't use comma here. I am here using dots, that's why I have used here comma. But if this is the last attribute in your table, if there are only three attributes, don't use comma at here at last attribute. So here using this syntax we can create table as well as column name of that tables, where column name is equal to name of the column or attribute of the table. Data type is the type of data the column can hold. Means if it is id, it will hold integer type of data. If it is a
Name, it will hold character type of data. That data type we have to write here. And size is equal to maximum length of column of the table. Maximum size what the particular column can hold, that we have to mention in this size. So this is the syntax of create table. Create and table is the keyword and table name is the user defined name. After that, all are these user defined name. In constraint only we have to use uh, uh, keywords and data type. Other things are user defined. These are the some data types which we can use in the Oracle. What are the types of data type? String type, numeric type, and date time type. In string type, we can get character with n value, means n means how much character you want from user. That number we can specify here. Maximum length of character data type is 2000 bytes. The second string type is varchar2 in bracket n. Variable length character data, maximum 4000 bytes it can take. And long variable length character data up to 4 GB we can take data using this data type. But maximum one per table. Maximum we can use such a type of data type. Maximum one per table. Second type of data type is numeric type. Here number we can get from user, number in the form of for example 10.00. If you want such type of number, then we can here write here uh, here this is p as it is, but in this q we can write the decimal, how much decimal you want from user. That number we can specify here. For example, if you write 2, so it will get number 10.00, 10.01, 10.02. It will not take 10.000 because we have specified here number in this queue. That is, we want only two decimal numbers from the user. Then integer, it will take integer type of value, and float, it will take decimal type of value. It will take uh, means here we are not restricting the decimal places. Here we are restricting that, but here we cannot restrict. Next data type is date and type. Here we can use the date from the user. Here we can use we can get the date from the user. So date is the data type for that. So these are the commonly used data types in Oracle: string type, numeric type, and date time type. Now we will see the example of create statement. We in the previous slide we have seen the syntax of create table. Here we will get the actual example. So what we have to create? We have to create a table customer. Name of the table is customer with columns customer number, customer name, address, and city. Means we have to create the table customer with 4 columns: customer number, customer name, address, and city. Create and table both are keywords. So we have to write it as it is, create table. After that, customer, this is the user defined name, or they will give you in the question, we have to create this table name. So customer is the table name. Inside this bracket, we have to create the attributes or column of your table. So first attribute is customer number. Customer number means it will get integer type of value. So we can write customer underscore number, which data type it can hold: integer, int. After that, we have to specify this column as a primary key. For the means constraint, we have to apply the constraint. For primary key means it will take unique type of value. We cannot enter duplicate values in this column. So this is the constraint we can apply on this column: primary space key. This is first constraint. In syntax we have seen after this there are two constraint written: constraint. So this is the first constraint, primary key. Means this column should not take repeated value 1 2 3. This value should be unique. Your roll number, like your roll number, it should be unique. Same customer number is unique. After that, not null constraint is there. Not null means that column should not empty. It should take any value, any integer type of value. So after that, comma, then write second attribute, cust underscore name. They have given here name, same name we are using here.
cust underscore name. This is the user defined name. After that, which type of value it can hold? Variable type or string type. So in this string type, this is the data type varchar2 in bracket 50. Means up to 50 characters we are getting values from the, we are getting string from the user. After that, also we have given one constraint that is called as a not null. Means customer name also should not empty. Comma. Now third attribute, that is address. Address is also type of string. So here we are getting varchar2 of 50. Comma. Next attribute is city. City also contains string type of data. So we will take here varchar2 in bracket 50. If you don't want to user to keep it blank, then we can write this constraint not null. Means here you have to decide which column should be compulsory entered by the user. So that column we can write here not null. If you don't want here, it could be empty. If you feel that it could be empty no matter how you are getting input, that time you can remove this not null. Okay, so this is the example of create table. You can note it down how to create table. So I am giving you second example. So you will compare again second example with this and create the table. Note it down. Create table. It is not compulsory to keep it in caps lock. You can write it in small letters also. First, note it down. Create table customer in bracket cust underscore number space integer. This is data type space primary space key. Here you can mention this is constraint. Arrow डालो यहाँ पे mention this is constraint primary key space not space null. This is also second constraint. When your first attribute is complete, then we have to write here comma. Go to the next line. Cust underscore name customer name space varchar2. This size you can decide whether we have to write 50 means what could be maximum name for customer, that number we have to specify here. Here I have taken 50 space not null. It should not be empty. So constraints are applied here. After end of this attribute, give comma address space varchar2 in bracket 50 comma city varchar2 50 not null. End of bracket semicolon. Compulsory after semicolon only it will give whatever result of your query. If your data table is created, it will give message table created. Otherwise, it will give error where you are wrong. That error it will specify here. Done. Yes, ma'am. Now you can create this table. Create table item with columns item number, item name, unit, and price. You will decide which data type we have to write here. So using same way, you have to create this table item. Instead of customer, table name is item, and these are the column name. Item number, item name, unit, and price. Four attributes are there. Finish it and tell me the answer.
Done? Yes? Done or not? Yes, सोहेल हो गया? अनम्यूट करो, बोलो कुछ तो। हो गया नहीं हो गया बोलो ना। Yes, ma'am. बोलो। Yes, क्या ma'am. क्या किया है बोलो। Ma'am, create table item, column item number int name varchar, एक 20, एक unit मिनट, price int, and एक price int. मिनट, एक मिनट, यहाँ पे बोलो। Yes. इधर आइटम। Create table item, हम्म। column name, column number int. कॉलम नेम बोलो ना, आइटम नंबर ना। Yes. Column item number int. हम्म। प्राइमरी की नॉट नल। ओके। देन Yes. नेक्स्ट। Item name varchar, 20, ओके। unit price int, unit int and price int. यूनिट इंट Unit int and price int. ओके। We have created like this. Everyone finished? Yes, ma'am. सबका हो गया ना गर्ल्स? आपने क्या किया है? ये डेटा टाइप आप डिसाइड कर सकते हैं, आपको पता होता है कि आपका यूजर इंटरफेस कैसा है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल डिसाइड दिस डेटा टाइप। अगर यूनिट अलग अलग टाइप के हैं, केजी में है, हाँ तो अलग आएगा। फिर दूसरे में इसमें है तो अलग आएगा, ग्राम में है तो अलग आएगा। तो आप यहाँ पे कैरेक्टर भी ले सकते हैं उसके लिए, कि यूजर से डायरेक्टली आप वैल्यू लेंगे। प्राइस इसने इंटीजर दिया है, उसके हिसाब से उसने दिया है। यहाँ पे आप फ्लोट भी ले सकते हैं। सो ये डेटा टाइप आप डिसाइड करने वाले हैं। जो आपका यूजर इंटरफेस और सॉफ्टवेयर रहेगा, उस सॉफ्टवेयर में कैसे वो प्राइस लेने वाले हैं आप। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल डिसाइड द डेटा टाइप। सो इसके हिसाब से ये सही है। अभी जो उसने किया है वो आपका अलग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटा टाइप आप डिसाइड करने वाले हैं। दूसरी वे से मैंने बताया है यहाँ पे, सेम है, अलग वे से बताया कि प्राइमरी की आप अलग वे से भी शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉलम के साथ शो की है। दिस इज ऑल्सो राइट, बट आपको अदर वे भी पता होनी चाहिए कि इस वे से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी वे क्या है, हाउ टू क्रिएट टेबल। यहाँ पे टेबल का नाम दिया है आइटम टेबल। देन आइटम नंबर इंटीजर नॉट नल। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ही कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है, नॉट नल। प्राइमरी की अभी यहाँ पे यूज नहीं किया है। करना है, कंपलसरी करना है वो प्राइमरी की आपको, लेकिन अलग वे से मैंने यहाँ पे बताया है नीचे। सेकंड है आइटम नेम varchar 250 नॉट नल। थर्ड यूनिट मैंने varchar लिया है, इट डिपेंड्स ऑन यूजर रिक्वायरमेंट, नॉट नल। प्राइस न्यूमेरिक लिया है, मुझे फ्लोट में लेना है इसलिए मैंने न्यूमेरिक लिया है, डजेंट मैटर। देन हियर दिस इज द वे हाउ टू क्रिएट प्राइमरी की। फर्स्ट वे वी हैव सीन इन प्रीवियस स्लाइड, दिस इज सेकंड वे। For this, we have to write constraint keyword. This is the keyword we have to write as it is. Then this is the name of your primary key. User defined name. pk underscore item underscore number means on which item you are using that key. We are creating the key. Same name we can use here. So you will understand on which column we have created this primary key.
सो पीके मीन्स प्राइमरी की लिया है, शॉर्ट फॉर्म किया है, अंडरस्कोर आइटम अंडरस्कोर नंबर मीन्स इस कॉलम पे मैं प्राइमरी की क्रिएट करने वाली हूँ। क्या क्रिएट करना है वो कीवर्ड यहाँ पे आना चाहिए, प्राइमरी स्पेस की मीन्स यहाँ पे कंस्ट्रेंट एंड ये प्राइमरी की बोथ आर कीवर्ड्स। इन ब्रैकेट कौन सा कॉलम है, एग्जैक्ट कॉलम का नाम यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। ये यूजर डिफाइंड नेम है, लेकिन ये एग्जैक्ट कॉलम का नाम है जो यहाँ पे है, आइटम अंडरस्कोर नंबर और ब्रैकेट कंप्लीट एंड, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कुछ नहीं इसलिए कॉमा नहीं दे रहे हैं हम। तो दिस इज द सेकंड वे टू क्रिएट अ प्राइमरी की ऑन कॉलम। ये समझ में आया आपको? ये भी लिख के ले लो, हाउ टू क्रिएट प्राइमरी की। वो फर्स्ट वे भी है, वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसे वैसे भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सो इतना भी लिखा तो भी चलेगा, ये लिखो और उसके बाद ये लिखो कंस्ट्रेंट का। फिनिश्ड? Yes, ma'am. Now next we have to create third table. Means here we have already created two tables, customer and item. Now we are creating third table. This is the customer order. If customer is going to place any order, that time customer data is required, as well as which order he is placing, that data is also required. Means item data is also required. So both column names, both tables primary key column name should be included in this customer order table. So here we have to create third table, that is called as a customer order with columns order number. This is the primary key of this table, customer order. Customer underscore number, this is the primary key of customer table. Here we are referencing that primary key. And here third table, third column is item number. This is the primary key of second table, item table. And after that, how much quantity we required of this particular item and shipping address. We are writing here shipping address. So these are the columns of customer order table. So for creating table, create table customer order. Customer order, they have given the table name. In bracket, first column name is order underscore number. So this is the main column of this or customer order table. So it is the primary key. We have to mention here primary key. Order underscore number integer, primary key not null. इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कस्टमर नंबर विच इज ऑलरेडी प्राइमरी की इन अदर टेबल। हियर वी आर रेफरेंसिंग दिस column customer number as a column in this table. So customer number integer not null, इतना ही लिखना है यहाँ पे। रेफरेंस नीचे दे रहे हैं हम किसका वो कॉलम है करके, किसका वो कंट्रोल एट्रीब्यूट है। फर्स्ट यहाँ पे आपको ऐसे ही लिखना है कस्टमर नंबर, उसका डेटा टाइप, और ये नॉट नल ही रहना चाहिए, ब्लैंक नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम रेफर कर रहे हैं दूसरे टेबल में से। थर्ड, ये कस्टमर कौन से कस्टमर ने ऑर्डर किया उसका नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। फिर कौन सा आइटम ऑर्डर किया है उसका नंबर आपको यहाँ पे चाहिए। तो आइटम नंबर इंटीजर नॉट नल, ये भी आपको ऐसे ही मेंशन करना है जैसे कस्टमर नंबर मेंशन किया। अभी उसके बाद नेक्स्ट ये क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, क्वांटिटी एंड शिपिंग एड्रेस। तो क्वांटिटी शिपिंग एड्रेस रह गया है, तो वेर वो डाल के लिख सकते हैं। क्वांटिटी न्यूमेरिक 10,2 कॉमा है यहाँ पे, गलती से पॉइंट हो गया है। सो क्वांटिटी कितनी चाहिए आप वो मेंशन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे नंबर कौन सा लेना है, डेटा टाइप कौन सा लेना है आपके बेसिस पे। आप केजी में ही देते हैं मीन्स फ्लोट पॉइंट्स में नहीं देते तो आप डायरेक्टली इंटीजर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये टेबल का काम हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, ये दो कॉलम जो है कस्टमर नंबर और आइटम नंबर, ये एक्चुअली कौन से टेबल से रेफर कर रहे, वो टेबल का नाम नीचे देना है। जब एक कॉलम एक टेबल में प्राइमरी की होता है और वो दूसरे टेबल में रेफर करते हैं, उसको फॉरेन की बोलते हैं, रेफरेंस की और फॉरेन की। सो हमको यहाँ पे वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में प्राइमरी की कैसे क्रिएट की थी, वैसे फॉरेन की क्रिएट करनी है टू रेफर इनटू अदर टेबल।
So constraint is the keyword. Then this is the user defined name, foreign key underscore customer cust underscore number. On which column we are using that name we have to specify here. So fk underscore cust underscore number. After that foreign key, यहाँ पे space है बीच में. Foreign key is the keyword. We have to write it as it is. Then on which column we are applying this foreign key, cust underscore number. This cust underscore number. Both column name should be same. After that, references. Which table we are referring here? References is the keyword. In bracket, we have to write the table name. So this cust underscore number is of table customer. Here in this table, we are referring. That's why we have to create the foreign key here. The attribute is in one table shown as a primary key. We can show that attribute in other table as a foreign key. Same item number is in one table as a primary key. Here we have to reference it as a foreign key. So constraint is the keyword. After that fk underscore item underscore number user defined name है foreign key के लिए. Then foreign key is the keyword. On which column we have to apply it? Item underscore number. Then references is the keyword and on which table we have to refer is item. यहाँ पे एंड करो ब्रैकेट्स, ये करली ब्रैकेट एंड ये यहाँ पे एंड हो गया आपका. तो ये समझ में आया. आपको क्रिएट करना है थर्ड टेबल. यहाँ पे ये समझ में आया है हाउ टू क्रिएट फॉरेन की. Yes, ma'am. एवरीवन. Yes, ma'am. Ma'am, Yes, it ma'am. one. Yes, ma'am. गर्ल्स क्या प्रॉब्लम है? Ma'am, explain it once now. अभी मैं डायग्राम शो करती हूँ, फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. आप क्या क्या क्रिएट कर रहे हैं वो डायग्रामेटिकली पहले शो करती हूँ, बाद में फिर से वो देखेंगे. पहले टेबल हम कौन सा क्रिएट कर रहे हैं? फर्स्ट टेबल कौन सा है? यस, फर्स्ट टेबल कौन सा है? कस्टमर ना. अनम्यूट करो. Yes, ma'am. Customer. कस्टमर है. उसके फील्ड्स क्या क्या है? कस्ट अंडरस्कोर नंबर, कस्ट अंडरस्कोर नेम, फिर क्या है? एड्रेस और सिटी. राइट. तो ये कॉलम आप क्रिएट करें. जो सिंटैक्स लिखा है क्रिएट टेबल कस्टमर, उसके बाद इन ब्रैकेट आपको कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप लिखना है. उससे आप क्या कर रहे हैं? कॉलम नेम क्रिएट कर रहे हैं. और ये सब होने के बाद आपका ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है. ब्लैंक मीन्स इसमें अभी तक डेटा नहीं है. तो ऐसा स्ट्रक्चर आपका क्रिएट हो जाएगा. इसमें से ये कस्टमर नंबर क्या है? प्राइमरी की है, जो कि यूनिक आना चाहिए. उसके बाद हमने नॉट नल भी रखा है उसको. मीन्स वो एम्प्टी नहीं आना चाहिए. सेम कस्टमर नेम को हमने नॉट नल रखा है. मीन्स ये भी कॉलम आपका एम्प्टी नहीं आना चाहिए. कंस्ट्रेंट डाला है. तो ये पहला आपका टेबल क्रिएट हो गया. सेम वे से आप क्या कर रहे हो? सेकंड टेबल क्रिएट कर रहे हो. आइटम टेबल विथ आइटम नंबर, आइटम नेम और क्या है? यूनिट एंड प्राइस. अभी आपने थर्ड कौन सा टेबल क्रिएट किया है? कस्टमर ऑर्डर. उसके फील्ड्स पहला जो है वो प्राइमरी की है. ओआरडी नंबर है ना. ओआरडी नंबर प्राइमरी की नॉट नल. सेकंड जो है कस्ट अंडरस्कोर नंबर. नेक्स्ट आइटम अंडरस्कोर नंबर, क्वांटिटी और एड्रेस भी एक दिया है. तो हम यहाँ तक ही फिनिश करते हैं अभी जो है वो. तो ये आपका थर्ड टेबल जो आप सिंटैक्स लिख रहे हैं इसमें स्लाइड में, ये वाले, इससे क्या होने वाला है? ऐसा आपका ब्लैंक टेबल्स क्रिएट होने वाले. सिर्फ स्ट्रक्चर
कि आपका टेबल नेम क्या होना चाहिए, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर आप कंस्ट्रेंट क्या अप्लाई कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे आप डिजाइनिंग का पार्ट कर रहे हैं। सपोज इसमें डेटा रहता, अभी डेटा नहीं डाल रहे, हम डीडीएल कमांड चल रहे हैं, डेटा नहीं डाल रहे, लेकिन ये मुझे एक्सप्लेन करना है ऑर्डर। सो मुझे यहाँ पे डेटा डाल के दिखाना पड़ेगा। सपोज कस्टमर नंबर 1 है, नेम उसका आ रहा है, पुणे सिटी का है, एड्रेस एड्रेस कुछ और डालो, सिटी पुणे है। दूसरा कस्टमर है, सेम नेम, ये उसका डेटा है। फिर हमारे पास हमारे डेटाबेस में हमारी वेबसाइट रहेगी कि उसमें हम कुछ तो सेल कर रहे हैं आइटम्स, तो वो आइटम हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेन यूनिट, हमारे पास अवेलेबल यूनिट कितने हैं वो डालना है, और पर यूनिट प्राइस कितनी है। सपोज 10 रुपीज है पेन की प्राइस। दूसरा है नोटबुक, हमारे पास 50 नोटबुक्स है, पर नोटबुक प्राइस 20 है। अभी क्या करेंगे हम, कोई हमारी वेबसाइट है, सपोज कोई तो कस्टमर आएगा हमारे आइटम्स बाय करने के लिए, परचेस करने के लिए। तो एक कस्टमर आता है, वो उसका डिटेल सब एंटर करता है। डिटेल एंटर करने के बाद हमारे पास ये डेटाबेस क्रिएट रहता है। अभी वो कस्टमर क्या करेगा, सर्च करेगा आइटम में से उसको कौन सा आइटम परचेस करना है। सपोज उसने पेन सर्च किया है, पेन सर्च किया, ये कस्टमर ऑर्डर ने, ये कस्टमर नंबर 1 जो है, उसको पेन परचेस करने हैं। तो यहाँ पे जब ऑर्डर, जब वो प्लेस करेगा, फाइनल करेगा, तब वो डेटा हमारा कस्टमर ऑर्डर में जाना चाहिए। तो वो डेटा क्या रहेगा, ऑर्डर नंबर तो प्राइमरी की है, वो उस डेटा का वो रहेगा। कस्टमर कौन सा है, कौन सा कस्टमर परचेस कर रहा है, कस्टमर नंबर 1। तो सिर्फ यहाँ पे 1 आना चाहिए। कौन सा आइटम परचेस कर रहा है, 1। सिर्फ यहाँ पे 1 आएगा, मीन्स पूरा उसका डिटेल इस टेबल में नहीं आएगा। उसका डिटेल लेने के लिए हम क्या करेंगे, उनको कनेक्ट कर रहे हैं। अभी ये प्राइमरी की है ना यहाँ पे, इसमें फॉरेन की है, मीन्स इन दोनों टेबल को हम लिंक कर रहे हैं। तो जब कस्टमर नंबर 1 आ जाएगा, तब वो जाके चेक करेगा कि 1 नंबर कस्टमर मीन्स कौन सा है। इस टेबल में चेक करेंगे कि हाँ ये कस्टमर है, ये सिटी का है, ये एड्रेस है उसका। सेम, उसने कौन सा आइटम नंबर लिया है, 1। 1 मीन्स हमको इधर नहीं समझ में आ जाएगा कि 1 मीन्स क्या है, तो वो टेबल में ही रेफरेंस जाएगा। 1 मीन्स क्या है, इसमें पेन है। तो कितनी क्वांटिटी उसको चाहिए, 5 सपोज। तो 5 क्वांटिटी जब वो परचेस करेगा, तब आपके टोटल कितने यूनिट है ना, उसमें से वो माइनस हो जाएंगे परचेस होने के बाद। तो जब ये ऑर्डर प्लेस करता है ना, उसका ये रेफरेंस, ये दोनों कस्टमर नंबर और आइटम नंबर, ये दोनों का रेफरेंस इन दो टेबल में है। अभी उनको कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया है, अभी डिजाइनिंग व्यू से कनेक्ट करते हैं ना, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप रहता है। यहाँ पे कस्टमर नंबर को क्लिक करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे किया ना, तो कनेक्शन दिखता है वो डिजाइन व्यू से किया तो। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कोडिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले ये कॉलम तैयार किए है, लेकिन अभी हमको दो टेबल को कनेक्ट करना है, कस्टमर एंड कस्टमर ऑर्डर, सेम वे item and customer order. For that reason, we have written this code. Constraint, foreign key, on which column we are applying that column name fk underscore cust underscore number. After that, foreign key is the keyword. We are going to refer that column which is already in other table as a primary key. So here we will write as a foreign key. Then, which is that column, customer number. ब्रैकेट कंप्लीट। रेफरेंसेस कौन से टेबल का वो कॉलम है, वो रेफरेंस यहाँ पे बताना है आपको, इसलिए रेफरेंसेस के बाद वो टेबल का नाम आना चाहिए जिसमें कस्टमर नंबर प्राइमरी की है। वो यहाँ पे हम इस टेबल में क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं उस टेबल का, और फॉरेन की बना रहे हैं उसको। सो वो टेबल का नाम यहाँ पे आएगा। सेम आइटम नंबर का भी सेम वैसे ही किया है। कंस्ट्रेंट कीवर्ड है, उसके बाद एफ के अंडरस्कोर आइटम नंबर, उसको की को हमने तैयार किया है यूजर डिफाइंड नेम से। फॉरेन की कीवर्ड है, उसके बाद किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं हम, आइटम नंबर पे। कौन से टेबल का है वो रेफरेंस यहाँ पे आएगा, रेफरेंस इस कीवर्ड और टेबल का नाम ही। क्लियर? यस गर्ल्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये हो गए क्रिएट स्टेटमेंट। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं।
डिजाइनिंग व्यू से हम क्या सिर्फ टेबल का नाम लिखते हैं डायरेक्टली, जैसे एक्सेस में हमने देखा था उसमें। अभी कैसे ये यूजर इंटरफेस आ गया आपके सामने, कि आप यूजर इंटरफेस से भी आप ब्लैंक डेटाबेस ये क्रिएट हो गया, उसका नाम यहाँ पे आपने दिया है, आप चेंज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट है क्रिएट करो। ये हमने देखा था फर्स्ट इसमें। ये जैसे टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड, ये स्ट्रक्चर है उसका। ये स्ट्रक्चर अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूजिंग क्वेरी हम तैयार कर रहे हैं। तो ओरेकल में यूजर इंटरफेस नहीं मिलता, ओरेकल में आपको एक ब्लैक ब्लैक स्क्रीन मिलेगी। सी का प्रोग्राम आपने किया है, सी का प्रोग्राम किया है क्या आपने? यस मैम। सी का कैसे आपको पूरा लिखना पड़ता है, वो एग्जीक्यूट करेंगे फिर वो ब्लैक स्क्रीन पे आपको आउटपुट मिलता है। सेम यहाँ पे आपको पूरा लिखना पड़ता है। ये टेबल क्रिएट करने हैं ना, तो ओरेकल का सॉफ्टवेयर है, पूरा व्हाइट कलर में रहता है, आपको ये पूरा लिखना होता है क्वेरी। उसके बाद एंटर करेंगे ना, तो वो मैसेज देता है कि टेबल क्रिएटेड, नॉट क्रिएटेड, कुछ एरर है तो वहां पे मेंशन करेगा। तो ये सब लिखना पड़ता है। और यहाँ पे एक्सेस में यूजर इंटरफेस है, सेम आपको करना है लेकिन यूजिंग कोडिंग करना है। जैसे हम यहाँ पे क्रिएट टेबल करते हैं, ये टेबल दूसरा तैयार हो गया, तो वहां पे हमको पूरा लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर उसके एट्रीब्यूट्स। अभी इसके एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने तो हम क्या करेंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे। उसका नाम यहाँ पे पूछ रहा है पहले, डिजाइनिंग करने से पहले। इधर डिजाइन व्यू में हम आईडी को क्या कर रहे हैं, ऑटो नंबर। यहाँ पे ये है ना प्राइमरी की है, ये की यहाँ से सेट कर सकते हैं आप। तो कौन से कॉलम को प्राइमरी की अप्लाई करनी है, वो यहाँ पे डिजाइन व्यू में ऐसे अप्लाई कर रहे हैं। फिर दूसरा कॉलम ये करना है, उसका डेटा टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा डेटा टाइप अप्लाई करना है। अभी नेम है तो स्ट्रिंग टाइप रहेगा, टेक्स्ट ले लिया। सेम एड्रेस। तो ये डिजाइन व्यू से जैसे आप कर रहे हैं, सेम आप यहाँ पे एसक्यूएल में कोडिंग व्यू से कर रहे हैं। क्लियर? ये क्रिएट स्टेटमेंट हो गई आज। डीडीएल कमांड में फर्स्ट स्टेटमेंट है क्रिएट, वो पार्ट हो गया। क्रिएट स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया क्या, देखो, या इसमें कोई डाउट है? यस, इज देयर एनी डाउट? नो नो मैम। मैम। नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट हम कल के लेक्चर में देखेंगे। दूसरे डीडीएल स्टेटमेंट से आगे के अल्टर, जो कि हम ऑलरेडी, अब अगर हमारा ये टेबल बन गया है, टेबल ऑलरेडी हमारा क्रिएट है, तो उसको मॉडिफाई करना है। अगर नाम गलत हो गया, आपका कस्टमर नंबर लिखना था लेकिन NUMBER पूरा का पूरा लिखा आपने, तो आप बाद में आप क्या सोचेंगे, नहीं मुझे नाम चेंज करना है, तो आप ऑल्टर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके लिए दूसरे स्टेटमेंट से आगे, वो भी आप क्या कर रहे हो, डिजाइनिंग व्यू पे ही अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए वो डीडीएल स्टेटमेंट में जा रहा है। बाद में आपको फील होता है कि कस्टमर ऑर्डर मुझे टेबल ही नहीं चाहिए, तो आप ड्रॉप कर दो सीधा, तो डिलीट हो जाएगा। तो ये तीन स्टेटमेंट जाएंगे डीडीएल कमांड्स में, जो कि आज हमने देखा क्रिएट स्टेटमेंट। कल हम ऑल्टर और ड्रॉप स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है, क्लियर? यस मैम। ठीक है, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा तो आप मीटिंग ये एंड कर सकते हैं। थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम।